श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवतम् प्रथमः स्कन्धः अथाष्टादशोऽध्यायः। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत उवाच। श्रुत्वा तमागतं राजा मन्त्रिभिः सहिता शुचिः पुरा पुरोहितं कृत्वा गुरुपुत्रं समभ्यगात्। कृत्वार्हणां नृपा सम्यक् दत्तासनमनुत्तमं पप्रच्छ कुशलां गाञ्च विनिवेद्य पयस्विनीं। सचतां नृपपूजां वै प्रत्यगृह्णाद्यथा विधि। पप्रच्छ कुशलं राज्ञे स्वं निवेद्य निरामयं। कृत्वा कुशलसम्प्रश्नम् उपविष्टं सुखासने सुखं व्याससुतं शान्तं पर्यपर्क्षत पार्थिव। किं निमित्तं महाभाग निःस्पृहस्य च मां प्रति जातं ह्यागमनं ब्रूहि कार्यं तन्मुनिषत्तम। सुक उवाच। व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहं सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः। मया नाङ्गीकृतं वाक्यं मत्वा बन्धं गुरोरपि न बन्धोस्तीति तेनोक्तो नाहं तत्कृतवान् पुनः। इति संदिग्धमनसं मत्वा स मुनिषत्तमः उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छमां शुचः। याज्योऽस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः। विदेहो लोकविदिता पाति राज्यमकण्टकम् कुर्वन् राज्यं तथा राजा मायापाशैर्न बध्यते। त्वं विवेशि कथं पुत्र वनवृत्ति परन्तप। पश्य तं नृपशार्दूलं त्यज मोहं मनोगतं। कुरुदारान् महाभाग पृक्ष वा भूपतिं च तं। सन्देहं ते मनोजातं कथयिष्यति पार्थिवः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मामेहि तरसा सुत। सम्प्राप्तोऽहं महाराज त्वत्पुरे च तदाज्ञया। मोक्षकामोऽस्मि राजेन्द्र ब्रूहि कृत्यं ममानघ। तपस्तीर्थभृतेज्याश्च स्वाध्यायस्तीर्थसेवनं। ज्ञानं वा वद राजेन्द्र मोक्षं प्रति च कारणं। जनक उवाच। शृणु विप्रेण कर्तव्यं मोक्षमार्गाश्रितेन यत्। उपनीतो वसेदादौ वेदाभ्यासाय वै गुरौ। अधीत्य वेदान्तान् दत्त्वा च गुरुदक्षिणां। समावृत्तस्तु गार्हस्थ्ये सदारो निवसेन्मुनिः। न्यायवृत्तिस्तु सन्तोषे निरासे गतकल्मषः। अग्निहोत्रादिकर्माणि कुर्वाणा सत्यवाक्शुचिः। पुत्रं पौत्रं समासाद्य बान्यप्रस्थाश्रमे वसेत्। तपसा षड्रिपूजित्वा भार्यां पुत्रे निवेश्य च। सर्वानग्निन्यथा न्याय मात्मन्यारूप्य धर्मवित्। वसेत् तुर्याश्रमे श्रान्ता शुद्धे वैराग्यसम्भवे। विरक्तस्याधिकारोऽस्ति सन्न्यासे नान्यथा क्वचित्। वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान्यथेति मतिर्मम। सुकाष्ठचत्वारिंशद्वै संस्कारा वेदबोधिता। चत्वारिंशद्गृहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्मभिः। अष्टौ च मुक्तिकामस्य प्रोक्ता समदमादयः। आश्रमादाश्रमं गच्छेद् इति शिष्टानुशासनम्। सुक उवाच। उत्पन्ने हृदि वैराग्ये ज्ञानविज्ञानसम्भवे। अवश्यमेव वस्तव्यमाश्रमेषु वनेषु वा। जनक उवाच। इन्द्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद। अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्ताननेकशः। भोजनेच्छां सुखेच्छां च सय्येच्छामात्मजस्य च। यति भूत्वा कथं कुर्याद् विकारे समुपस्थिते। दुर्जनं वासनाजालं न शान्तिमुपयाति वै। अतस्तत्क्षमनार्थाय क्रमेण च परित्यजेत्। ऊर्ध्वं सुप्ता पतत्येव न शयाना पतत्यधः। परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गं लभते पुनः। यथा पिपीलिका मूला शाखायामधिरोहति। शनैः शनैः फलं याति सुखेन पदगामिनी। विहंगस्तरसा याति विघ्नशङ्कामुदस्य वै। श्रान्तो भवति विश्रम्य सुखं याति पिपीलिका।
मनस्तो प्रबलं काममजेयमकृतात्मभिः अतः क्रमेण जेतव्यमाश्रमानुक्रमेण च गृहस्थाश्रम संस्थोऽपि शान्ता सुमतिरात्मवान् न च हृष्येन च तपेल्लाभालाभे समो भवेत् विहतं कर्म कुर्वाणस्त्यजश्चिन्तान्वितं च यत् आत्मलाभेन सन्तुष्टो मुच्यते नात्र संशयः पश्याहं राज्यसंस्थोऽपि जीवन्मुक्तो यथा नघः विचरामि यथा कामं न मे किञ्चित् प्रजायते भुञ्जानो विविधान् भोगान् कुर्वन् कार्याण्यनेकशः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तो भवानघ कथ्यते खलु यदृश्यमदृश्यं बध्यते कुतः दृश्यानि पञ्चभूतानि गुणास्तेषां तथा पुनः आत्मागम्योऽनुमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन स कथं बध्यते ब्रह्मन् निर्विकारो निरञ्जनः मनस्तु सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले ह्यस्मिन् सर्वं भवति निर्मलं भ्रमन् सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं न मनो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकं न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशाम्यति शत्रुर्मित्रमुदासीनो भेदा सर्वे मनोगता एकात्मत्वे कथं भेदा संभवेद्द्वैतदर्शनात् जीवो ब्रह्म सदैवाहं नात्र कार्या विचारणा भेदबुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते अविद्येयं महाभाग विद्या चैतन्यवर्तनं विद्या विद्ये च विज्ञेये सर्वदैव विचक्षणै विना तपं हि छायाया ज्ञायते च कथं सुखम् अविद्यया विना तद्वत् कथं विद्यां च वेत्ति वै गुणागुणेषु वर्तन्ते भूतानि च तथैव च इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु को दोषस्तत्र चात्मनः मर्यादा सर्वरक्षार्थं कृता वेदेषु सर्वशः अन्यथा धर्मनाशात् सौगता नाम इवा नघ धर्मनाशे विनष्टे स्याद्वर्णाचारोऽति वर्तितः अतो वेदप्रदिष्टेन मार्गेण गच्छतां शुभं सुक उवाच संदेहो वर्तते राजन्न निवर्तति मे क्वचित् भवता कथितं यत्तच्छृण्वतो मे नराधिप वेदधर्मेषु हिंसा स्यात् अधर्म बहुला हि सा कथं मुक्तिप्रदो धर्मो वेदोक्तो बत भूपते प्रत्यक्षेण त्वनाचारा सोमपानं नराधिप पशूनां हिंसनं तद्वद्भक्षणं चामिषस्य च सौत्रामणौ तथा प्रोक्ता प्रत्यक्षेण सुराग्रह द्यूतक्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च श्रूयते स्म पुरा ह्याशिक्षस्बिन्दुर्नृपोत्तमः यज्वाधर्मपरो नित्यं वदान्या सत्यसागरः गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता चोत्पथगामिनां यज्ञाश्च विहितास्तेन बहवो भूरिदक्षिणा चर्मणां पर्वतो जातो विन्ध्याचलसमा पुनः मेघाम्बुलावनाज्जाता नदी चर्मण्वती शुभा सोऽपि राजा दिवं याता कीर्तिरस्याचला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धि प्रवर्तते स्त्रीसंगेन सदा भोगे सुखमाप्नोति मानवः अलाभे दुःखमत्यन्तं जीवन्मुक्ता कथं भवेत्। जनक उवाच हिंसायज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता उपाधियोगतो हिंसा नान्यथेति विनिर्णयः यथा चेन्धनसंयोगा दग्नौ धूमा प्रवर्तते तद्वियोगात् तथा तस्मिन् निर्धूमत्वं विभाति वै अहिंसा च तथा विद्धि वेदोक्तां मुनिसत्तमा रागिणां सापि हिंसैव निष्प्रियाणां न सा मता अरागेण च यत्कर्म तथाहंकारवर्जितम् अकृतं वेद विद्वांसा प्रवदन्ति मनीषिणः गृहस्थानां तु हिंसैव या यज्ञे द्विजसत्तमा अरागेण च यत्कर्म तथाहंकारवर्जितं सा हिंसैव महाभाग मुमुक्षूणां जितात्मनां
जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे सुकाय जनकोपदेश वर्णनं नामाष्टादशः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतानोत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। सुक उवाच संदेहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम, माया मध्ये वर्तमाना स कथं निःस्पृहो भवेत्। शास्त्रज्ञानं च सम्प्राप्य नित्यानित्यविचारणं, त्यजते न मनोमोहं स कथं मुच्यते नरः। अन्तर्गतं तमच्छेतुं शास्त्राद् बोधो हि न क्षमः, यथा न नश्यति तमाकृतया दीपवार्तया। अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्तव्या सर्वदा बुधैः, स कथं राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत् तथा। वित्तैषणा न ते शान्ता तथा राज्यसुखैषणा, जयैषणा च संग्रामे जीवन्मुक्ता कथं भवेत्। चौरेषु चौरबुद्धिस्तु साधुबुद्धिस्तु तापसे, स्वपरत्वं तवाप्यस्ति विदेहस्त्वं कथं नृप। कटुतीक्ष्ण कषायाम्ल रसान् वेत्सि शुभान्, शुभेषु रमते चित्तं नाशुभेषु तथा नृप। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिश्च तव राजन् भवन्ति हि, अवस्थास्तु यथा कालं तुरीयातु कथं नृप। पदात्यस्वरथे भाश्च सर्वे वै वसगा मम, स्वाम्यहं चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे। मिष्टमत्सि सदा राजन्मुदितो विमनास्तथा, मालायां च तथा सर्पे समदृक्व नृपोत्तम। विमुक्तस्तु भवेद् राजन् समलोष्टास्मकाञ्चनः, एकात्मबुद्धिः सर्वत्र हितकृत् सर्वजन्तुषु। न मेद्य रमते चित्तं गृहदारादिषु क्वचित्, एकाकेन स्पृहोत्यर्थं चरेयमिति मे मतिः। निसंगो निर्ममा शान्ता पत्रमूलफलासनः, मृगवद्विचरिष्यामि निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। किं मे गृहेण वित्तेन भार्यया च सुरूपया, विरागमनसा कामं गुणातीतस्य पार्थिव। चिन्त्यसे विविधाकारं नानारागसमाकुलं, दम्भोऽयं किल ते भाति विमुक्तोऽस्मीति भाससे। कदाचित् शत्रुजा चिन्ता धनजा च कथा कदाचन, कदाचित् सैन्यजा चिन्ता निश्चिन्तोऽसि कदा नृप। वैखानसा ये मुनयो मिताहाराजितभृता, तेऽपि मुह्यन्ति संसारे जानन्तोऽपि हि सत्यतां। तव वंशसमुत्थानां विदेहा इति भूपते, कुटिलं नाम जानीहे नान्यथेति कदाचन। विद्याधरो यथा मूर्खो जन्मान्धस्तु दिवाकरः, लक्ष्मीधरो दरिद्रश्च नाम तेषां निरर्थकम्। तव वंशोद्भवा ये श्रुता पूर्वे मया नृपा, विदेहा इति विख्याता नामता कर्मतो न ते। नामा भवद्राजा पूर्वं तव कुले नृप, यज्ञार्थं स तु राजर्षिर्वसिष्ठं स्वगुरुं मुनिं निमन्त्रयामास। तदा तमुवाच नृपं मुनिः, निमन्त्रितोऽस्मि यज्ञार्थं देवेन्द्रेणाधुना किल, कृत्वा तस्य मखं पूर्णं करिष्यामि तवापि वै। तावत् कुरुष्व राजेन्द्र संभारं तु शनैः शनैः। इत्युक्त्वा निर्ययौ सोऽथ महेन्द्र यजने मुनिः, निमिरण्यं गुरुं कृत्वा चकार मखमुत्तमं। तच्छ्रुत्वा कुपितोत्यर्थं वसिष्ठो नृपतिं पुनः, शशाप च पतत्वद्य देहस्ते गुरुकुलोपक। राजापि तं शशापाथ तवापि च पतत्वयम्, अन्योन्यशापात् पतितौ तावेव च मया श्रुतं। विदेहेन च राजेन्द्र कथं सप्तो गुरु स्वयं, विनोद इव मे चित्ते विभाते नृपसत्तमा। जनक उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदिदं मतं, तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः। पितो संगं परित्यज्य त्वं वनं गन्तुमिच्छसि, मृगैः सह सुसंबंधो भविता तेन संशयः। महाभूतानि सर्वत्र निस्संगा को भविष्यसि, आहारार्थं सदा चिंता निश्चिंता स्या कथं मुने। दण्डाजिनकृता चिंता यथा तव वनेऽपि च,
तथैव राज्यचिन्ता में चिन्तयानस्य वा न वा विकल्पोपहतस्त्वं वै दूरदेशमुपागतः न मे विकल्पसन्देहो निर्विकल्पोऽस्मि सर्वथा सुखं स्वपिमि विप्राहं सुखं भुञ्जामि सर्वथा न बद्धोऽस्मीति बुद्धाहं सर्वदैव सुखी मुने त्वं तु दुःखे सदैवासि बद्धोऽहमिति शङ्कया इति शङ्कां परित्यज्य सुखी भव समाहितः देहोऽयं मम बन्धोऽयं न ममेति च मुक्तता तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति च निश्चयः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सुखाप्रीतमनाभवत् अप्रक्षतं जगामासु व्यासस्याश्रममुत्तमम् आगच्छन्तं सुतं दृष्ट्वा व्यासोऽपि सुखमाप्तवान् आलिङ्ग्याघ्राय मूर्धानं पप्रच्छ कुशलं पुनः स्थितस्तत्राश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहितः वेदाध्ययनसम्पन्नः सर्वशास्त्रविशारदः जनकस्य दशां दृष्ट्वा राज्यस्थस्य महात्मनः स निवृत्तिं परां प्राप्य पितुराश्रमसंस्थितः पितॄणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुन्दरी सुकश्चकार पत्नीं तां योगमार्गस्थितोऽपि हि स तस्यां जनयामास पुत्राश्चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा कन्यां कीर्तिं समुत्पाद्य व्यासपुत्रा प्रतापवान् ददौ विभ्राजपुत्राय त्वणुहाय महात्मने अणुहस्य सुता श्रीमान् ब्रह्मदत्ता प्रतापवान् ब्रह्मज्ञा पृथिवीपाला सुकन्या समुद्भवः कालेन कियता तत्र नारदस्योपदेशतः ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गमनुत्तमं पुत्रे राज्यं निधायाथ गतो बदरिकाश्रमं मायाबीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गलं नारदस्य प्रसादेन जातं सद्यो विमुक्तिदं कैलाससखिरे रम्ये त्यक्त्वा सङ्गं पितुः सुखः ध्यानमास्थाय विपुलं स्थिता सङ्गपराङ्मुखा उत्पपातगिरे शृङ्गा सिद्धिं च परमां गतः आकाशगो महातेजा विरराज यथा रविः गिरे शृङ्गं द्विधा जातं सुखस्योत्पतने तदा उत्पाता बहवो जाता सुखश्चाकाशगो भवत् अन्तरिक्षे यथा वायुस्तूयमाना सुरर्षिभिः तेजसाति विराजन्वै द्वितीय इव भास्करः व्यासस्तु विरहाक्रान्ता क्रन्दन् पुत्रेति चासकृत् गिरे शृङ्गे गतस्तत्र सुको यत्र स्थितो भवत् क्रन्दमानं तदा दीनं व्यासं मत्वाश्रमाकुलं सर्वभूतगता साक्षी प्रतिशब्दमदात्तदा तत्राद्यापि गिरे शृङ्गे प्रतिशब्दस्फुटो भवत् रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोकसमन्वितं पुत्रपुत्रेति भासन्तं विरहेण परिप्लुतं शिवस्तत्र समागत्य पाराशर्यमबोधयत् व्यासशोकं मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवित्तमः व्यासशोकं मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवित्तमः परमां गतिमापन्नो दुर्लभां चाकृतात्मभिः तस्य शोको न कर्तव्यस्तया शोकं विजानता कीर्तिस्ते विपुला जाता तेन पुत्रेण चानघ व्यास उवाच न शोको याति देवेश किं करोमि जगत्पते अतृप्ते लोचने मेद्य पुत्रदर्शनलालसे महादेव उवाच छायां द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनोहरां तां वीक्ष्य मुनिशार्दूल शोकं जहि परन्तप सूत उवाच तदा ददर्श व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सुप्रभां दत्त्वा वरं हरस्तस्मत् तत्रैवान्तर्धीयत अन्तर्हिते महादेवे व्यासाश्वाश्रममभ्यगात् सुखस्य विरहेणापि तप्ता परमदुःखितः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे सुखस्य विवाहादि कार्यवर्णनं नामैकोनविंशः। अथ विंशः सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म। राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रांगद का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, विचित्रवीर का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से
मृत्यु। व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषय ऊचुः सुकस्तु परमां सिद्धिमाप्तवान् देवसत्तमः किं चकार ततो व्यासस्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। सूत उवाच शिष्याभ्यासस्य ये प्यासन् वेदाभ्यासपरायणा आज्ञामादाय ते सर्वे गता पूर्वं महीतले असितो देवलश्चैव वैशम्पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गता सर्वे तपोधना तानेतान्वीक्ष्य पुत्रं च लोकान्तरितमप्युत व्यासाशोकसमाक्रान्तो गमनायाकरोन्मतिं सस्मार मनसा व्यासस्तां निषादसुतां शुभां मातरं जाह्नवीतीरे मुक्तां शोकसमन्वितां स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासस्त्यक्त्वा तं पर्वतोत्तमम् आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनिः द्वीपं प्राप्याथ पप्रच्छ क्व गता सा वरानना निषादास्तं समाचक्षुर्दत्ता राज्ञे तु कन्यका दासराजोऽपि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिपुरासरं स्वागतेनाभिसत्कृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलिः। दासराज उवाच अद्य मे सफलं जन्म पावितं नः कुलं मुने देवानामपि दुर्दर्शं यज्जातं तव दर्शनं यदर्थमागतोऽसि त्वं तद्ब्रूहि द्विजसत्तमा अपि दाराधनं पुत्रास्तुदायत्तमिदं विभो सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराश्रममण्डलं व्यासस्तपासमायुक्तस्तत्रैवाससमाहितः सत्यवत्या सुतौ जातौ सन्तनो रमितद्युतेः मत्वा तौ भ्रातरौ व्यासा सुखमाप वने स्थितः चित्रांगदा प्रथमजो रूपवान् शत्रुतापनः बभूव नृपते पुत्रा सर्वलक्षणसंयुतः विचित्रवीर्यनामासौ द्वितीया समजायत सोऽपि सर्वगुणोपेता सन्तनो सुखवर्धनः गांगेया प्रथमस्तस्य महावीरो बलाधिकः तथैव तौ सुतौ जातौ सत्यवत्यां महाबलौ सन्तनुस्तान् सुतान् वीक्ष्य सर्वलक्षणसंयुतान् अमस्ताज्जय्यमात्मानं देवादीनां महामना अथ कालेन कियता सन्तनु कालपर्ययात् तत्याज देहं धर्मात्मा देहि जीर्णमिवाम्बरं कालधर्मगते राज्ञे भीष्मश्चक्रे विधानतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि दानानि विविधानि च चित्रांगदं ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान् स्वयं न कृतवान् राज्यं तस्माद्देवभृतोऽभवत् चित्रांगदस्तु वीर्येण प्रमत्ता परदुःखदः बभूव बलवान् वीरा सत्यवत्यात्मजा शुचिः अथैकदा महाबाहो सैन्येन महतावृतः प्रचचार वनोद्देशान् पश्यन् वध्यान् मृगान् रुरून् चित्रांगदस्तु गन्धर्वो दृष्ट्वा तं मार्गगं नृपम् उत्ततारान्तिकं भूमिर्विमानवरमास्थितः तत्राभूच्च महद्युद्धं तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने 3 वर्षाणि तापसा इन्द्रलोकमवापासो गन्धर्वेण हतो रणे भीष्मा श्रुत्वा चकारासो तस्योर्ध्वदैहिकं तदा गांगेयाकृतशोकस्थो मन्त्रिभिः परिवारितः विचित्रवीर्यनामानं राज्येशं च चकारः मन्त्रिभिर्बोधिता पश्चात् गुरुभिश्च महात्मभिः स्वपुत्रं राज्यगं दृष्ट्वा पुत्रशोकहतापि च सत्यवत्यति सन्तुष्टा बभूव वरवर्णिनी व्यासोऽपि भ्रातरं श्रुत्वा राजानं मुदितोऽभवत् यौवनं परमं प्राप्ता सत्यवत्या सुता शुभा चकार चिन्तां भीष्मोऽपि विवाहार्थं कनीयसः काशीराजसुतास्तिस्रा सर्वलक्षणसंयुता तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयंवरे
राजानो राजपुत्राश्च समाहूता सहस्रशः इच्छा स्वयंवरार्थं वै पूज्यमाना समागता तत्र भीष्मो महातेजास्ता जहार बलेन वै निर्मथ्य राजकं सर्वं रथेनैकेन वीर्यवान् स जित्वा पार्थिवान् सर्वास्ताश्चादाय महारथः बाहुवीर्येण तेजस्वी ह्याससादगजाह्वयं मातृवद् भगिनीवच्च पुत्रीवच्चिन्तयन् किल तिस्रा समानयामास कन्यका वामलोचना सत्यवत्यै निवेद्यासु द्विजानाहूय सत्वरः दैवज्ञानवेदविदुषा पर्यपृच्छच्छुभं दिनं कृत्वा विवाहसंभारं यदा वै भ्रातरं निजं विचित्रवीर्यं धर्मिष्ठं विवाहयति तात यदा तदा ज्येष्ठाप्युवाचेदं कन्यका जाह्नवीसुतं लज्जामानासितापाङ्गे तिस्त्रीणां चारुलोचना गंगापुत्र कुरुश्रेष्ठ धर्मज्ञ कुलदीपक मया स्वयंवरे शाल्यो व्रतोस्ते मनसा नृपः वृताहं तेन राज्ञा वै चित्ते प्रेम समाकुले यथा योग्यं कुरुस्वाद्य कुलस्यास्य परन्तप तेनाहं व्रतपूर्वास्मि त्वं च धर्मभृताम्बरः बलवानसि गाङ्गेय यथेक्षसि तथा कुरु। सूत उवाच एवमुक्तस्तया तत्र कन्यया कुरुनन्दनः अपृच्छत् ब्राह्मणान् वृद्धान् मातरं सचिवांस्तथा सर्वेषां मतमाज्ञाय गाङ्गेयो धर्मवित्तमः गच्छेति कन्यकां प्राह यथा रुचिवरानने विसर्जिताथ सा तेन गता साल्वनिकेतनम् उवाच तं वरारोहा राजानं मनसेप्सितं विनिर्मुक्तास्मि भीष्मेण त्वन्मनस्केति धर्मतः आगतास्मि महाराज गृहाणाद्य करं मम धर्मपत्नी तवात्यन्तं भवामि नृपसत्तम चिन्तितोऽसि मया पूर्वं त्वयाहं नात्र संशयः। शाल्व उवाच गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन न ग्रहीष्ये करं तव परुच्छिष्टां च कः कन्यां गृह्णाति मतिमान् नरः अतोऽहं न ग्रहीष्यामि त्यक्तां भीष्मेण मातृवत् रुदती विलपन्ती सा त्यक्ता तेन महात्मना पुनर्भीष्मं समागत्य रुदती चेदमब्रवीत् शाल्वो मुक्तां त्वया वीर न गृह्णाति गृहाण मां धर्मज्ञोषि महाभाग मरिष्याम्यन्यथा ह्यहम्। भीष्म उवाच अन्यचित्तां कथं त्वां वै गृह्णामि वरवर्णिनि पितरं संवरारोहे व्रज शीघ्रं निराकुला तथोक्ता सा तु भीष्मेण जगाम वनमेव हि तपश्चकार विजने तीर्थे परमपावने द्वे भार्ये चातिरूपाढ्ये तस्य राज्ञो बभूवतुः अम्बालिका चाम्बिका च काशीराजसुते शुभे राजा विचित्रवीर्योऽसौ ताभ्यां स महाबलः रेमे नानाविहारैश्च गृहे चोपवने तथा वर्षाणि नवराजेन्द्रा कुर्वन् क्रीडां मनोरमां प्रापासौ मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा मृते पुत्रेति दुःखार्ता जाता सत्यवती तदा कारयामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि मन्त्रिभिः भीष्ममाह तदैकान्ते वचनं चाति दुःखिता राज्यं कुरु महाभागा पितुस्ते सन्तनो सुता भ्रातुर्भार्यां गृहाणत्वं वंशश्च परिरक्षय यथा न नाशमायाति ययातेर्वंश इत्युत। भीष्म उवाच प्रतिज्ञा मे श्रुता माता पितृर्थे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दारसंग्रहम्। सूत उवाच तदा चिन्ता तु राजाता कथं वंशो भवेदिति नालसाद्धि सुखं मह्यं समुत्पन्ने राजके गाङ्गेयस्तामुवाचेदं मा चिन्तां कुरु भामिनि पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रजं चोपपादय कुलीनं द्विजमाहूय बद्ध्वा सह नियोजय नात्र दोषोऽस्ति वेदेऽपि
कुलरक्षाविधौ किल। पौत्रं चैवं समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते। अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कानीनं सुसुतं मुनिं। जगाम मनसा व्यासं द्वैपायनमकल्मषं। स्मृति मात्रस्ततो व्यास आजगाम सतापसः। कृत्वा प्रणामं मात्रेत संस्थितो दीप्तिमान् मुनिः। भीष्मेण पूजिता कामं सत्यवत्या च मानितः। तस्थौ तत्र महातेजा विधूमोऽग्निरिवापरः। तमुवाच मुनिं माता पुत्रमुत्पादयाधुना। क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजम्। व्यासा श्रुत्वा वचो मातुराप्तवाक्यमन्यत। ओमित्युक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालमचिन्तयत्। अम्बिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा। संगं प्राप्य मुने पुत्रमसूतान्धं महाबलं। जन्मान्धं च सुतं वीक्ष्य दुःखिता सत्यवत्यपि। द्वितीयां च वधूमाह पुत्रमुत्पादयासु वै। ऋतुकालेऽथ सम्प्राप्ते व्यासेन सह संगता। तथा चाम्बालिका रात्रौ गर्भं नारी दधार सा। सोऽपि पाण्डुसुतो जातो राज्ययोग्यो न सम्मतः। पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षान्ते च पुनर्वधूम्। आहूय च ततो व्यासं सम्प्रार्थ्य मुनिषत्तमं। प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागारमुत्तमं। न गता च वधूस्तत्र प्रेष्या सम्प्रेषिता तया। तस्यां च विदुरो जातो दास्यां धर्मान् सता शुभः। एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्रादयस्त्रयः। उत्पादिता महावीरा वंशरक्षणहेतवे। एतद्वा सर्वमाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवम्। व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्मविदानघः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां प्रथमस्कन्धे धृतराष्ट्रादि नामुत्पत्तिवर्णनं नाम विंशः प्रथमः स्कन्धः सम्पूर्णः। श्रीदेव्यार्पणम् अस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। श्री जगदम्बिकायै नमः।